Hello friends, welcome to our new video series on R programming for data analytics. This entire course is of 30 hours and this entire course will be covered in 12 modules. यहाँ पर हम पूरे कोर्स को जो है 12 मॉड्यूल्स में कवर करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं मॉड्यूल 1 में हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ R programming and in this module I will cover variables, data types, assignment operators, arithmetic, relational and logical operators. मॉड्यूल 2 में हम कवर करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स इन आर जैसे वेक्टर्स हैं, लिस्ट, मैट्रिसेस, एरेज, फैक्टर्स, डेटा फ्रेम्स. एंड मॉड्यूल 3 में हम कवर करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड वेक्टराइज ऑपरेशंस. इसके बाद आता है आपका फोर्थ मॉड्यूल फंक्शंस इन आर जिसमें आई विल ट्राई cover built-in functions, user-defined functions, function arguments, and anonymous functions. Similarly, in module 5, I will cover data input, output, and file handling. कैसे फाइल हैंडलिंग करते हैं, जैसे reading CSV files, Excel files, TXT files, how to write data to files, and how to work on the directories, and how to handle the missing directories. Module 6 में हम कवर करेंगे data cleaning and data wrangling टेक्निक्स, डेटा को कैसे क्लीन किया जाता है और हाउ टू हैंडल द मिसिंग डेटा एंड हाउ वी कैन फिल्टर इट आउट एंड सॉल्व द डेटा. एंड देन वी विल वर्क ऑन द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स एंड अदर टेक्निक्स लाइक EDA टेक्निक्स, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस टेक्निक्स. एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस टेक्निक्स में बेसिकली वी विल समराइज द डेटा इन टर्म्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. जैसे इसमें हम निकालेंगे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी. मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या होती है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है. तो ये सारी चीजें हम जो है मॉड्यूल 7 में पढ़ेंगे. मॉड्यूल 8 में हम पढ़ेंगे डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग आर, लाइक बेसिक्स ऑफ विजुअलाइजेशन, आर प्लॉट्स हैं, कैसे आर प्लॉट्स ड्रॉ करते हैं, जीजी प्लॉट्स क्या होते हैं, एंड इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ कस्टमाइजेशन. नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल 9. मॉड्यूल 9 में हम जो है पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूजिंग आर, लाइक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, व्हाट इज द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट कैसे हम जो है कोडिंग के हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट इन मॉड्यूल 10 में हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, मींस सिंपल लीनियर रिलेशन मॉडल्स, मल्टीपल लीनियर रिलेशन मॉडल्स एंड मॉडल इंटरप्रिटेशन एंड प्रेडिक्शन मॉडल कैसे डेवलप किए जाते हैं. वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स इन मॉड्यूल 10. एंड मॉड्यूल 11 में हम कवर करेंगे टाइम सीरीज एंड बिजनेस एनालिटिक्स, लाइक टाइम सीरीज कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रेंड्स इन सीजनलिटी कैसे फाइंड करते हैं, एंड हाउ कैन वी फोरकास्ट, हाउ वी कैन डू द फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन द करंट डेटा. एंड वी विल आल्सो टेक द बिजनेस केस स्टडीज इन मॉड्यूल 11. एंड मॉड्यूल 12 में हम जो है कंप्लीट केस स्टडी इन मेनी प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, लाइक सेल्स डेटा एनालिसिस का एक प्रोजेक्ट लेंगे. नेक्स्ट हम कस्टमर चर्न एनालिसिस के ऊपर भी प्रोजेक्ट्स लाएंगे एंड हेल्थ केयर एनालिटिक्स एंड फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस के ऊपर भी हम 2 मोर प्रोजेक्ट्स करेंगे. यानी कि मॉड्यूल 12 में हमारे टोटल 4 केस स्टडी होंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी होंगे. नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल 12 में हम जो है करियर गाइडेंस एंड अदर लाइक कैसे बनाते हैं एंड एंट्री टिप्स, वी प्रोवाइड ऑल दिस थिंग्स.